think you have to stretch it out. No, nothing. Yeah, I'm sorry. Go ahead. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Vallabha Girivaradari Gopi Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Prajnana Ranjana Yashoda Nandana Prajnana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Prajnana Ranjana Yashoda Nandana Prajnana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Prajnana Ranjana Yashoda Nandana Prajnana Ranjana Yashoda Nandana Prajnana Ranjana
Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayom Vishnupad Varamahamsa Parivajakacharya Astotara Satasri Shri Maharaj Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsi Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Srimati Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Radhamadan Mohan Ki Jai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Charan Nirvishesha Shunyavadi Pasa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuing with the 9th chapter of the 10th canto, Mother Yasoda binds the Lord Krishna, text number 6. Thank you. Sanjata Kopa Spuritanuradharam Sandasya Dhadbir Dadhi Manta Bhajanam Bitva Rishashru Durishad Ashmana Raho Jighasa Hayangavam Antaram Gataha Sanjatakopa Spuritan Rudantaram Sanjatakopa Spuritan Rudantaram Sandashidhadbir Dharimanta Bhajanam Sandasya Dhadbir Dharimanta Bhajanam Vidvam Rishashru Drushad Ashmanaraho Vidvam Rishashru Drushad Ashmanaraho Jaghasa Hayangavam Antarangata Jaghasya Hayanghavam Antarangata
Sanjatakopa Spuritarudhantaram Sanjatakopaha Spuritanadaram Sandasya Dhadbir Dhadimanta Bhajanam Sandasya Dadvedadimanta Bhajanam Vidvamrishashru Jushat Asmanaraho Vidwan Vishashur Vishnashmanaro Jaghasahayang Havam Antarangata. Jagasahayyam Bhagavamantaramgata. Chant, please. Sanjatakopa Spuritanadaram Sandasya Dhadmir Dhadimanta Bhajanam Vidwan Vidvamrishashru Jushat Asmanaraho Jaghasahayang Havam Antarangata. Sanjatakopa Spuritanadaram Sandasya Dhadmir Dhadimanta Bhajanam Vidvamrishashru Jushat Asmanaraho Jagasya Gavamamparam Gata. Sanjatakopa Spuritarudhantaram Sandasya Dhadmir Dhadimanta Bhajanam Vidvamrishashru Jushat Asmanaraho Jagasya Gavamamparam Sanjatakopa Spuritanadaram Sandasya Dadvedadimanta Bhajanam Vidvamrishashru Jushat Asmanaraho Jagasya Gavamamparam Gata. Vaishnavis. Sanjatakopa Spuritanadaram Sandasya Dadvedadimanta Bhajanam Vidvamrishashru Jushat Asmanaraho Jagasya Gavamamparam Gata. Anyone else? Word for word. Sanjatakopa. In this way. In this way, Krishna being very angry. Krishna being very angry. Spirita Aruna Adaram. Spurita Aruna Adaram. Swollen reddish lips. Swollen reddish lips. Sandasya. Capturing. Dhadbi. By his teeth. Dhadimanta Bhajanam. The pot in which yogurt was being churned. Bhitva. Breaking. Mrishya Ashru. With false tears in his eyes. Drishat Ashmana. With a piece of stone. Raha. In a solitary place. Jaghasa. Began to eat. Hayangavam. The freshly churned butter. Antaram. Within the room. Gataha. Having gone.
Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Being very angry and biting his reddish lips with his teeth, Krishna, with false tears in his eyes, broke the container of yogurt with a piece of stone. Then he entered the room and began to eat the freshly churned butter in a solitary place. Purport. Again, a two-sentence purport. It is natural that when a child becomes angry, he can begin crying with false tears in his eyes. So Krishna did this, and biting his reddish lips with his teeth, he broke the pot with a stone, entered the room, and began to eat the freshly churned butter. Om Gyananandasya Gananjana Shalakaya Chakshurmalitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Satyamena Bhutale Swayamupagaramayam Jadi Svavanandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagatatam Sahagana Raganamitam Tam Shivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyavcha Varijanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So as we can see in this verse, in this material world, even children imitate the activities and pastimes of Krishna. When children misbehave, they will also sometimes get false tears in their eyes. Why? Because they know they've done wrong, but they do not want to get punished by their mother, by their father. And so they're thinking that, oh, if I can cry, then my mother, my father will be compassionate upon me and they won't chastise me. But both the parents know that tears are genuinely false. I don't know if you can see those two words together, but I just did. Genuine false. It's like true lies. So Krishna, in the same way, he did not want his mother to chastise him. He wanted to do what he wanted to do. He was very disturbed that his mother took him off her lap and set him down to go to the kitchen to take care of the pot of milk on the stove before Krishna had finished drinking her breast milk. And because of this, he was very upset. They can understand. And back there, they're translating. Yes? I think. Raji, which one you want? Only you want line by line translation or? Oh, I'm sorry. You have to do like 2 sentences. Yeah. Please excuse me. What would you prefer? You're doing the... Oh, I didn't see your microphone. What would you prefer? Whatever you say, Raji. Okay, translate what I just said. हरे कृष्णा। तो इस भौतिक जगत में जो बच्चे हैं वो भी जो भगवान कृष्ण का श्लोक में लीला बताई गई उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। जैसे कि जब भी वो कोई गलत काम करते हैं तो अपने आंखों में झूठे आंसू डाल देते हैं क्योंकि वो अपने माता पिता से सजा नहीं पाना चाहते। तो भगवान कृष्ण भी वैसा ही करते हैं। जब उनकी माता रसोई में जाते हुए भगवान कृष्ण को नीचे उतार दी थी अपने गोद से, तो भगवान कृष्ण पूरा दूध पान ना करने के कारण अत्यंत क्रुद्ध थे, तो वो भी झूठे आंसू भरकर रोने लगे क्योंकि वो सजा नहीं पाना चाहते थे। Thank you. My apologies
Then Vishwanath Chakravarti Thakur writes on this particular verse. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के संदर्भ में बताते हैं, Although it was useless, Mrishasru, although it was useless, ये नकली आंसू जो भी थे, he shed tears as this is the nature of a small child. उन्होंने एक छोटे बच्चे के स्वभाव में आकर ऐसा झूठी आंसू बहाया। Krishna used a stone in order to make a hole in the pot without making any sound. कृष्ण भगवान ने एक कंकड़ मार के मटकी तोड़ दी बिना आवाज के। He went into another room and ate butter made from the previous day's milk. तो जो दूसरे कमरे में जाकर उस पूरे मक्खन को खा गए। So Krishna is also very tricky, as those who have engaged in devotional service for any amount of time understand. तो भगवान कृष्ण बहुत ही चालाक है, हम भक्ति में किस प्रकार से लगे रहते हैं वह सब समझ जाते हैं। We sometimes may want to trick Krishna by maybe minimizing our service a little bit. हम यदि भगवान कृष्ण के साथ अगर थोड़ा चालाकी करना चाहें अपनी सेवा को कम करके, But Krishna says in Bhagavad Gita, of gamblers I am the cheat. लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सारे छल करने वालों में मैं सबसे बड़ा हूँ। When we try to cheat Krishna, we are only cheating ourselves. यदि हम भगवान कृष्ण को धोखा देना चाहते तो हमारा खुद ही हम चले जाते हैं। Because the path given to us by Srila Prabhupada is the path by which we can achieve the highest perfection. क्योंकि श्री प्रभुपाद ने हमें जो पथ दिया है उसके अनुसार हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। And by trying to cut corners, you understand that term, cutting corners? यदि हम कुछ कोने काटने, अब कुछ बचना चाहें सेवा से, We are simply cheating ourselves. तो वास्तव में हम अपने को ही ठग रहे हैं। So the rules and regulations given to us by the spiritual master are for our own benefit and protection. तो आध्यात्मिक गुरु ने जो हमें नियम कानून दिए हैं वह हमारे सुरक्षा के लिए और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हैं। Just like where I live in New Vrindavan, it is a mountainous area. जैसे कि हम न्यू वृंदावन में रहते हैं, वह पहाड़ी इलाका है। And the roads go up, down, left, right, up, down. There's not a straight road anywhere. तो वहां पे एक भी सड़क सीधी नहीं, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी सब ऐसी है। And on sharp turns, there is sometimes a guardrail to prevent a driver from going over the cliff. तो कभी कभी कुछ ज्यादा घुमावदार रहता है, जैसे कि वो ड्राइवर को बचाने के लिए कि वो पहाड़ी से बच के जा सके। And we have some cliffs that are 100 meters. तो कई सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर ऊंची हैं। And similarly, the government will also put signs on the road. तो उसी प्रकार से जो सरकार है वो कई सारे चिन्ह भी लगा देती है। Speed limit, curve to the left, curve to the right, like that. हाँ, जैसे वो गति की सीमा या फिर बाईं तरफ मुड़ो दाईं तरफ जाओ ऐसा। Now, we can agree to abide by the signs or not. अब हम चाहें उन चिन्हों को माने या ना माने, हमारी इच्छा। But the signs are meant not only for our protection, but for the protection of every other driver on the road. लेकिन वो जो भी चिन्ह है वो हमारे और जितने भी लोग सड़क पे जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए है। A god brother of mine, Maharaja Ghosh, he passed away some years back. He's from a state called North Dakota. तो हमारे जो एक गुरु भाई हैं वो अभी शीघ्र ही चले गए कुछ वर्ष पूर्व, उन्होंने North Dakota. नॉर्थ डिकोटा में थे। That's the name of the state. There are many roads that have very dangerous curves. वहां पे ऐसी कई सारी सड़कें हैं जिनमें बहुत ही सारे खतरनाक मोड़ हैं। And whenever somebody goes too fast on that curve, crashes their car and dies, the state puts one big mark on the sign. तो जब भी कोई उस सड़क पे बिना किसी सावधानी के जाता है तो वहीं पे मर जाता है, तो जो सरकार क्या करती है उस बोर्ड पे एक और चिन्ह लगा देती है, लाइन बना देती है। So when you see a sign with many marks on it, you know I better go slow. तो जब आप ऐसे चिन्ह को देखते हैं जिसमें बहुत सारी लाइन हो
तो उसमें आप समझ सकते हैं कि हम भी उसमें से एक हो सकते हैं। Shri Shri Radha Madan Mahan ki jai. Yesterday, I don't know if how many of you caught it. I was sitting outside yesterday during Shubhananda Prabhu's class. And at this time, when the curtains opened, he said, Shri Shri Radha Madan Chandra ki jai. Did anybody catch that? The Radha Madan Chandra are the deities in New Vrindavan where Shubhananda Prabhu is living. And when I started laughing when I heard him say that. First of all, did I hear that right? I heard that right. And I started laughing. And I told him later on, I said, you can take the Brijabasi out of the dam, but you can't take the Lord out of his heart. तो कल जब भागवतम क्लास हो रही थी, शिवानंद प्रभु जब इस समय ऑर्डर खुला तो बोले श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा था, मुझे लगा क्या मैंने सही सुना, और फिर मैं जोर से हंसने लगा। मैंने सोचा कि जैसे किसी आप भक्त को उसके धाम से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके हृदय से धाम नहीं निकाल सकते। So the rules and the regulations that are in the scriptures are for our protection, but also for the protection of everyone else. तो जो शास्त्रों में नियम कानून है वो हमारे और सबकी सुरक्षा के लिए हैं। Just like a driver going too fast is a danger to everyone on that particular piece of road. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है तो उस सड़क पे जितने भी जा रहे हैं उन सबके लिए वो खतरा है। So when there's do nots in the scriptures, when there's restrictions given to us by our spiritual master or within the scriptures, we should understand these are for my protection. तो जो भी दिशा निर्देश शास्त्रों में और हमारे आध्यात्मिक गुरु देते हैं, हमें ऐसा मानना चाहिए कि वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। These are for my not my benediction, my protection and my benefit. ये हमारी सुरक्षा और लाभ के लिए हैं। It is not that the author of the scripture, whether Vyasadeva or whomever, is chastising us. ऐसा नहीं कि जो श्रील व्यासदेव हैं वो हमको सजा दे रहे हैं। Sometimes the parents, out of a sense of anger with the child, will chastise the child for something. तो जैसे कि कभी माता पिता अपने बच्चों को किसी कारण सजा देते हैं, but it is done generally out of a sense of love to protect the child. वह सिर्फ प्रेम के कारण अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए करते हैं। So in exactly the same way, when the spiritual master chastises us or rebukes us, it may not be palatable, we may not like it, but it is for our protection. उसी प्रकार से जब हमारे गुरु हमको डांटते फटकारते हैं तो हमें भले पसंद ना आए, लेकिन वो हमारे भले के लिए है। In 1976, during Srila Prabhupada's last visit to New Vrindavan, he conducted initiations. 1976 में श्रील प्रभुपाद आखिरी बार न्यू वृंदावन गए तो वहां पे दीक्षा दे रहे थे। And generally, Srila Prabhupada would give initiations to the first initiates, followed by Brahminical initiation, and if there are any candidates, then sannyas initiation lastly. तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से दीक्षा देते थे, प्रथम दीक्षा, द्वितीय, फिर बाद में अगर कोई संन्यास लेना चाहे। And the format was that when you were called, you would go up, offer obeisances in front of Srila Prabhupada. और प्रक्रिया ये थी कि जब आपको बुलाया जाए आप जाके श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, and then get up on your knees and face him. और फिर आप उठेंगे, श्रील प्रभुपाद को फिर सम्मुख रहेंगे, And he would generally ask, what are the four regular principles? और फिर वो पूछेंगे चार नियामक सिद्धांत क्या हैं, Because this is essential for us to know and remember. क्योंकि ये हमें जानने के लिए सबसे केंद्र वाली वस्तु है। In a rare instance, he would look at the disciple and say, after they would say the four principles, he would say, so which is your favorite? तो श्रील प्रभुपाद जब भक्तों से पूछते थे चार नियामक सिद्धांत क्या, उसके बाद आंखों में देख के पूछते थे इनमें से तुम्हारा सबसे प्रिय कौन है। On this particular day in New Vrindavan, 1976, I forget, late June, early July, something. I was getting my second initiation, and the God brothers were getting first initiation. तो न्यू वृंदावन की बात है, कुछ जून जुलाई के समय की बात है। मेरा दूसरा दीक्षा होने वाली थी और मेरे कुछ अन्य गुरु भाई उनका पहली दीक्षा होने वाली थी। And Srila Prabhupada would, after you answered and you were saying what the regular principles are, he would give you your name and give you your japa mala.
तो श्रील प्रभुपाद 4 नियामक सिद्धांत पूछने के बाद नया नाम देते थे और जपमाला देते थे। And everybody in the temple room would go, Jai Hari Bol. और सब लोग मंदिर में जोर से जय और हरि बोल बोला करते थे। After he had given initiation to 1 or 2 devotees, I don't recall how many, तो फिर जब 1-2 भक्तों को दीक्षा दे दिए थे तो मुझे बुलाया गया। he saw that the devotee in front of him had 1 strand of neck beads. जब किसी अन्य भक्त को बुलाया गया था तो उन्होंने देखा कि उस भक्त के पास सिर्फ एक ही लाइन वाली कंठी थी। Now that was a standard. When you first came and you were a bhakta, whoever, you wore 1 strand of tulsi neck beads. तो पहले कोई भी एक ही लाइन वाली कंठी पहना करता था। When Srila Prabhupada asked him, where are your neck beads? And he said, here, Srila Prabhupada, and he showed him 1 strand of neck beads. तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा तुम्हारी कंठी कहाँ है, तो उसने अपना वही एक दिखा दिया लाइन। And Srila Prabhupada said, no, 3 strands. श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं 3 चक्के होने चाहिए। And he was forceful. और वो एकदम जोर देकर बोल रहे थे। And then so he was looking at the young man when he said that. Then he looked up into the temple room and he said, who is the rascal who has recommended this boy for initiation? और फिर उस मंदिर में फिर बोल रहे हैं कि कौन सा वह दुष्ट है जिसने इसको दीक्षा लेने के लिए नाम दिया है। And I knew who it was, and I saw him back right next to the door at the other end of the room. और मैं जानता था कि कौन है, वो कमरे में दूसरे छोर पर दरवाजे के पास बैठे थे। And without even turning around to walk out the door, he stepped sideways 1 step and backed out the door. और बिना मुड़े वो पीछे 1 कदम लेके सीधे बाहर चले गए। Because motion attracts the eyes. अब क्योंकि कोई भी काम करता है तो उससे आंख में पकड़ में आ जाता है। And when Srila Prabhupada was angry, nobody wanted to attract his attention to you. तो जब श्रील प्रभुपाद गुस्से में थे तो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे श्रील प्रभुपाद उस पर ध्यान दे। And Srila Prabhupada did not continue the initiation. उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा वहीं पे रोक दी। Prabhu, who was the temple president in New Vrindavan at that time, he jumped up off the floor and ran out of the room. तो जो वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष थे वो मंदिर से बाहर चले गए। And he was gone for probably 3 minutes, maybe 4 minutes, but when he came back, he had extra neck beads. और फिर जब वो 3-4 मिनट बाद आए तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कंठी थी। And so then the devotees put them on, so they had 3 strands on. तब भक्तों ने उसे पहना, तब उनकी जो 3 चक्के वाली कंठी हो गई। And after that, Srila Prabhupada was completely calm, completely peaceful, like nothing had happened. उसके बाद श्रील प्रभुपाद पूर्णतः शांत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। But he exhibited heavy anger, fiery anger. लेकिन उन्होंने कुछ समय तक बहुत ही भारी गुस्सा अपना प्रदर्शित किया। Because the devotees, for whatever reason, didn't know or forgot, whatever the reason, they were not following his instructions. क्योंकि किसी न किसी कारण से भले वो भूल गए हों, भक्त उनके निर्देशों को नहीं पालन कर रहे थे। And it was obvious to me and everybody in that room that having 3 strands of neck beads on at the time of initiation and every day thereafter is very important. उसके बाद से हम जितने भी लोग मंदिर में थे समझ गए कि उसी समय दीक्षा के समय से गले में 3 चक्के वाली कंठी होना बहुत जरूरी है। Now, has anybody ever read that instruction in any of Prabhupada's books? क्या आप में से किसी ने यह श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ा कभी? Or heard Prabhupada say that in any of his lectures? या फिर श्रील प्रभुपाद ने अपनी किसी कक्षा में से बताया? Or his morning walks at any time? या फिर अपने मॉर्निंग वॉक में कभी ऐसा कुछ बताया? I haven't, and no one has ever told me, yeah, I heard Prabhupada say that. It's never been said to me. तो मैंने किसी अन्य स्थान पर इसको कभी नहीं सुना। But it was very obvious for anybody who was in that room that this is very important principle. तो लेकिन मंदिर में जितने भी लोग उस समय थे वह समझ गए बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है कि सबके पास 3 चक्के की कंठी होनी चाहिए। And once Srila Prabhupada established this, then his anger was totally released.
and it was gone. और जब श्रील प्रभुपाद मंदिर से बाहर निकले तो उनका वो पूर्णतः शांत हो गए थे। It is not like us conditioned souls who experience anger by the force of the modes of material nature, and then after doing whatever we're doing, then it lingers. तो ऐसा कोई वो बद्ध जीव के कारण नहीं कि जो प्रकृति के भौतिक गुणों के अंदर आकर गुस्सा करते हैं और उसके बाद कुछ गलत कदम उठाते हैं। Srila Prabhupada just was able to immediately summon the anger, express it, and then immediately release it, and it's gone. तो श्रील प्रभुपाद तुरंत गुस्से को प्रकट किए, प्रदर्शित किए और तुरंत ही उसको वापस खत्म कर दिए। This is one of the qualities of someone who has controlled their mind and senses. तो यह वही कर सकता है जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है। Srila Prabhupada expressed anger to us to establish firmly within our mind and heart this principle. श्रील प्रभुपाद ने अपना गुस्सा इसलिए व्यक्त किया जिससे हमें वह दृढ़ता से हमें यह स्थापित कर सके, And I'll never forget it. और जैसे हम इसे कभी नहीं भूलें। So in a similar fashion, Krishna is disappointed with the activities of his mother. उसी तरीके से यहाँ पे भगवान कृष्ण माताओं के साथ अपनी यहाँ लीला कर रहे हैं। Krishna wanted to finish taking her breast milk, but Mother Yashoda put him down and ran off to do another service. भगवान कृष्ण पूरा स्तनपान ठीक तरीके से करना चाहते थे, लेकिन माता यशोदा ने उन्हें उतार दिया दूध उतारने के लिए। Now, on one hand, is it wrong that she remembered that the milk was boiling over and ran to take care of it? तो क्या आप ये बताइए, क्या है एक दृष्टिकोण से गलत था कि वह भगवान कृष्ण को उठा के दूध के पास गई? I mean, what was she doing with the milk? She wanted to make a nice preparation for Krishna. वो भला दूध से क्या करना चाहती थी? भगवान के लिए एक भोग बनाना चाहती थी। She wasn't boiling the milk so that she could eat nicely. She was doing it as a service to Krishna. वो दूध इसलिए नहीं उबाल रही थी कि वो खुद अच्छे से खाएं, वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए अच्छे से कर रही थी। But what was Krishna's reaction? He became angry. लेकिन कृष्ण की प्रतिक्रिया की कि वो गुस्से हो गए। And when she was gone, he snuck into another room. He took a stone from the ground and he very carefully broke the pot that was hanging that had the butter in it. लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? वो दूसरे कमरे में जाकर कंकड़ उठा के मटकी फोड़ दिए। And Vishwanath Chakravarti Thakur says he used a stone in order to make a hole in the pot without making any sound. और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने कंकड़ से ऐसे मटकी फोड़ी की आवाज नहीं आई। Tricky Krishna. बहुत चालाक है कृष्ण। And then what did he do? He reached into the pot. He ate the butter. How many of you have ever eaten freshly churned butter? तो भगवान ने तुरंत मटकी फोड़ के मक्खन खा लिया। आप में से कितनों ने तुरंत मथा हुआ मक्खन खाया है? Yeah, just butter. We have a few honest devotees here. Thank you very much. It's really sweet. It's unbelievably sweet. तो यह बहुत ही मीठा होता है। So Krishna, he wanted to eat the butter, but additionally he wanted to chastise his mother. तो भगवान कृष्ण मक्खन खाना चाहते थे, लेकिन साथ में अपने माता को परेशान भी करना चाहते थे। And he ate as much butter as he wanted, and then he called for his monkey friends. जितना हो सकता था वो खाएं, फिर उसके बाद बंदरों को बुला लिया। And he was also feeding them butter. और उनको भी फिर मक्खन खिलाने लगे। So these are some of the pastimes of the Lord, that he will perform activities to increase the pleasure of his devotees. तो ये भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिससे वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। Now the pleasure may become indirectly, like you can touch your nose like this, or you can, well, I can't do it, but you can touch your nose like that. तो यह जो आनंद है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी आ सकता है, जैसे आप नाक को इधर से पकड़े या घुमा के पकड़े। So Krishna is taking the indirect route to give his mother pleasure. तो भगवान कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से अपनी माता को आनंद दे रहे हैं। By having false tears and expressing false anger.
तो अपने झूठे आंसू और झूठे गुस्से के माध्यम से, because that gives. No, let me take a step back. There's 12 rasas in your relationship with Krishna. There's 5 primary relationships and there's 7 secondary relationships. तो भगवान कृष्ण के साथ 12 रस हैं, जिसमें से 5 मुख्य 7 गौण हैं। And the secondary relationships are to give contrast. और जो 7 गौण रस हैं उसमें विरोधाभास है। And by that contrast, the primary rasas, the pleasure derived from those primary, is increased. तो उस विरोधाभास से जो मुख्य रस हैं उसमें आनंद की बढ़ोतरी हो जाती है। And that's true even in the material world. तो ऐसा भौतिक जगत में जैसे देखें, Do you know what a fair is? Like a carnival? जैसे मेला होता है, Would they be familiar with it? Okay, so how does he call it? A fair, or well, you'll say. मेला। So sometimes there's a fair, and at the fair there are many rides. तो आप मेला में जाए, वहाँ कई सारे झूले रहते हैं। Are they familiar with the roller coaster? Yeah. Okay, so at many fairs there is a ride called a roller coaster. और कई सारे जो मेला है उसमें रोलर कोस्टर रहता है, जिसमें ऊपर नीचे से होके जाते हैं। And it goes up the incline slowly. और वो धीरे से ऊपर जाता है। And then once it gets the peak and starts going down, it starts going very fast. और जब वो शिखर पे पहुंच जाता है तो वहां से बहुत तेजी से नीचे जाता है। And it's very common that the people that are riding it will scream. और यह बहुत ही सामान्य है कि जो भी लोग बैठे हैं उसमें बहुत जोर से चिल्लाते Their हैं। hair will be flying back, their jewelry flying back. It's pleasurable for them. उनका जो बाल है, ज्वेलरी, वो सब बिखर जाती है, लेकिन उसमें उनको आनंद आता है। And this is the contrast, a contrast in the primary versus secondary. तो यह एक विरोधाभास है मुख्य और गौण रस में। Because when you're going up the incline, there's not a lot of pleasure. क्योंकि मान लो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो कोई ज्यादा आनंद नहीं है। So Krishna, he also does the same thing to increase the transcendental pleasure of his devotees. तो इसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों को दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। Krishna says in Bhagavad Gita that he comes to please the devotees, to annihilate the miscreants, and to deliver the devotees, and to give them pleasure. तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि वह इस भौतिक जगत में भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं और अधर्मियों का विनाश करने के लिए आते हैं। But Srila Prabhupada explains that Krishna does not have to come to annihilate any number of demons. तो भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को इस दुनिया में किसी भी असुरों का विनाश करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। He can create tidal waves that will immediately kill hundreds and thousands of people. और ऐसा प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे समुद्र की लहरें जैसे कर सकते हैं, तो उसमें सैकड़ों हजारों राक्षस तुरंत मर सकते हैं। Or a volcanic eruption that will kill thousands and thousands of people. या फिर कोई जैसे वोल्केनो आ सकता है जिसमें हजारों एक साथ मर जाएं। So his material energy is completely capable of annihilating the miscreants. तो यह जो भौतिक शक्ति है, इसमें भौतिक शक्ति है जिससे असुरों का नाश हो सके। But Krishna comes to give pleasure to his pure devotees. लेकिन भगवान कृष्ण आते हैं अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए। Because the pure devotees of Krishna, we want to please Krishna. We want to satisfy his transcendental senses. क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी जो दिव्य इंद्रियां हैं उनको आनंद प्रदान करना चाहते हैं। And pure devotees of Krishna are not really interested in other expansions or incarnations or avatars of Krishna. तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं भगवान के किसी अन्य विस्तार या अंश वाले अवतार से ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। We have the example of during the rasa dance, after Krishna left, the gopis were looking for him everywhere. तो हमारे पास उदाहरण है, रास नृत्य के बाद भगवान कृष्ण जब अदृश्य हो गए तो गोपियां उनको हर जगह ढूंढ रही थी। And when they saw Lord Narayan, they simply offered respects to him. और जब उन्होंने नारायण को देखा तो उन्हें सिर्फ प्रणाम किया। And they asked him, "Have you seen Krishna?" और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने कृष्ण को देखा है?
they were highly educated in terms of the Vedic scriptures. They knew the scriptures perfectly well. तो यद्यपि वह शिक्षित नहीं थी लेकिन फिर भी शास्त्रों को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, But on the one hand, they were beyond the scriptures लेकिन वो शास्त्रों के परे चली गई थी because they knew clearly in their heart the conclusion of the scriptures. What is the purpose of all knowledge? What is the purpose of every scripture? It's to somehow or another give pleasure to the transcendental senses of the Lord. लेकिन फिर भी वो अपने हृदय में सारे जो शास्त्र हैं उनका निचोड़ निष्कर्ष जानती हैं थी कि जो शास्त्रों का सार है वह भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, आनंद देना। So even when they saw Lord Narayan, they were not disrespectful, but they weren't interested. तो वो जब भगवान नारायण को देखी तो उन्होंने सम्मान प्रकट किया लेकिन उसमें रुचि नहीं दिखाई। So these are some of the pastimes of the Lord with His pure devotees. तो भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। And as you well know, I'm sure many of you know much better than I, this canto is full of pastimes of Krishna with His devotees. और ये जो स्कंद है इसमें भगवान कृष्ण की अपने भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं हैं। So I will stop there on this subject. तो अभी के जो प्रवचन उसको यहीं पे विराम देते हैं। There was one other subject that I forgot to mention in my last class. A god sister left her body within the past week. तो अपने पिछले प्रवचन में बताना चाहता था कि हमारी गुरु बहन है, वो पिछले सप्ताह अपना यहाँ से इस दुनिया से भौतिक जगत से चली गई। Her name is Meghamala Devi Dasi. उनका नाम मेघमाला माती जी है। And her and her husband moved from Brooklyn in New York City to New Vrindavan in January of, I forget if it was 73 or 74. I wasn't there. तो वो और उनके जो पति हैं वो न्यू वृंदावन 1973 या 74 के जनवरी में गए थे। Now in January in New Vrindavan, especially 50 years ago, in the winter, it was cold. और जो न्यू वृंदावन है वो बहुत ही ठंडा रहता है जनवरी में, 50 साल पहले विशेष रूप से। And when they arrived, there was really no place for them to stay. और जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको वहां पे रहने के लिए भी जगह नहीं थी। So they lived in the front seat of a truck for many months. तो फिर वो एक ट्रक में रहा करते थे, ट्रक की सीट पर रहा करते थे। It was a big truck, but it was still a truck. तो एक बहुत बड़ा ट्रक था लेकिन फिर भी एक ट्रक था। And in those days, in the mid-70s, to live in New Vrindavan, there was a great deal of tapasya. That was just an everyday affair. तो आप उस समय नया वृंदावन में रहना एक तपस्या थी, प्रतिदिन तपस्या। There was no running water in any building. कहीं भी नल से पानी नहीं आता था। You had to go outside to answer calls of nature. आपको शौच के लिए भी दूर जाना पड़ता था। We bathed outside. हमको नहाना बाहर पड़ना था। During the winter, we bathed indoor, but with the same cold water in an unheated room. तो ठंडी में हम कमरे में नहाते थे, लेकिन वही ठंडा पानी से। And all the devotees lived like this, women included. और सारे भक्त माताएं भी ऐसा ही किया करती थी। And we men like to think that we had it really hard, but it was even more challenging for the women. तो हमारे लिए तो कुछ ठीक था, लेकिन ये माताओं के लिए और भी ज्यादा मुश्किल था। Because in addition to having their sadhana, in addition to having their services, they have a husband, and sometimes they also have children to raise. क्योंकि माताओं के साथ क्या था भाई, उनको अपनी साधना भी थी, सेवा भी थी, पति भी थे और बच्चे भी थे। And in those days, we did not have even a washing machine for the clothes. उस समय हमारे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं हुआ करती थी कपड़े धुलने के लिए। So even the women, they performed a great deal of austerity, of tapasya. तो उस समय माताएं भी बहुत सारी तपस्याएं की। And Mother Meghamala, she lived in New Vrindavan for many years. तो मेघमाला माता जी न्यू वृंदावन में कई सालों से थी।
Her and her husband she gave birth. They raised 3 boys there in Vrindavan. उनके 3 संतान हैं नए वृंदावन में. Anyhow, she lives in the area outside of New Vrindavan. But for many years now, she's been afflicted with cancer. तो कई सालों से नए वृंदावन में और नए वृंदावन से बाहर ही उनको कैंसर है. And she was getting treatment for that, but cancer is a very aggressive and vicious disease. And eventually it took her life just last week. तो उन्होंने उसका उपचार भी कराया है, लेकिन कैंसर ने उसकी जान ले ली. So in a couple of days on the 17th, in New Vrindavan, there will be memorial services for Mother Megamala. तो अभी कुछ हफ्तों में उनके लिए कुछ सेवा या फिर उनकी पुण्य स्मृति उत्सव है. I wanted to share this with you because for us, Ujjain Prabhu and myself, it's a God sister. But for all of us, it is a process of living. That dying is a part of living. तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो हमारी गुरु बहन है, लेकिन आप सबके लिए हमें ये सीख मिलती है कि ये जो मृत्यु है वह भी जीने की कला है. And not only is it a part of living, it is one of the most important parts. तो यह सिर्फ जीने का अंग नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है. If one already has a bona fide spiritual master and has established that link, then the time of death is really the next biggest test. तो यदि किसी के पास प्रामाणिक गुरु है और तो फिर मृत्यु के समय उनके पास यह एक बड़ी परीक्षा होती है. So it's very important that while you are young, while you are healthy, that you learn to take shelter of Krishna at every moment. तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक आप नौजवान हैं, जब तक आप में शक्ति है, तब तक आप हर एक क्षण भगवान कृष्ण की शरण लें. So that whenever something danger or something frightening happens, without even thinking, we call Krishna. तो जब भी आपके पास कुछ भी खतरनाक हो या फिर खतरनाक हो, तो आप तुरंत ही भगवान कृष्ण को पुकारिए. Because at the time of death, at the time of great an accident or great personal turmoil, we will not be able to think. क्योंकि जो मृत्यु का समय होता है उसमें बहुत हताशा रहती है, उस समय हम भगवान को नहीं स्मरण कर सकते. At best, we will simply react. उस समय हम सिर्फ प्रतिक्रिया कर सकते हैं कुछ. So we have to train ourselves that our natural reaction to anything scary or frightening is to immediately, without thinking, Krishna. तो हमें यह प्रयास करना है कि हमारा जो किसी भी खतरनाक समय या फिर मुसीबत के समय हमारी जो प्रतिक्रिया हो वो कृष्ण को पुकारने की होनी चाहिए. And Krishna will immediately come. और कृष्ण तत्काल आ जाएंगे. Immediately. और तुरंत. Immediately. तुरंत मतलब तुरंत. And he will give us all protection. और फिर वो पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे. Now, that statement, all protection, does not mean we would not the body wouldn't get injured, the body might experience pain. तो ये पूरी सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि हमारा जो शरीर है उसमें कोई दर्द या पीड़ा नहीं होगी. But he will protect us, and I have a personal story to give. तो लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा करेंगे. मेरी एक व्यक्तिगत कहानी है. Many years ago, 22 years ago, I was living in Southern California in San Diego. तो 20-22 साल पहले की बात है. मैं सैन डिएगो में कैलिफोर्निया में रहा करता था. And I had a big motorcycle. और मेरे पास एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल थी. You know, I was driving on the freeway one evening, and anyhow, long story short, I got hit by a driver going the same direction. तो मैं फ्रीवे पे गाड़ी चला रहा था और पीछे से आके किसी ने मेरे को टक्कर मार दी. And I remember seeing in the rear view mirror a car coming very fast. I could see the headlights coming really fast. और मैं गाड़ी चलाते समय शीशे में देखा था कि एक कार जो बहुत तेजी गति से आ रही थी उसने मुझे टक्कर मारी. And we were approaching a curve on the road, and he was going so fast he could not keep
his car on the road. तो क्योंकि हम एक मोड़ पे पहुंच रहे थे तो और उस समय उसने अपनी कार कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए उसने मुझे टक्कर मार दी। And the last thing I saw out of the corner of my eye was a man in the driver's seat going like this in the steering wheel because it was a curve to the left. तो आखिरी चीज जो मैंने देखी, जो ड्राइवर था वो अपना कार ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि उस तरफ मोड़ था। That was the last thing I saw. ऐसा आखिरी चीज मैंने उस समय देखी। The next thing I saw was the black night sky. तो अगला चीज जो मैंने देखा था एकदम पूरा काला अंधकार। And some man, I had no idea who he was looking down at me and kind of yelling, "Do you know where you are? Do you know where you are?" तो एक आदमी मुझको चिल्ला रहा था, बोल रहा था तुमको पता है तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, तुमको पता है तुम कहाँ हो। He was from the ambulance. He was one of the technicians that came to rescue me. तो वह एक व्यक्ति था, सुरक्षा कर्मी, जो मुझे बचाने आया था। My point is that from the time the car swerved to hit me and I tumbled down the freeway and the technician came, I did not experience it. तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस समय से कार मुझे टक्कर मारी और वो मैं जमीन पे पूरा लुढ़क के गिर गया और वो व्यक्ति मुझे बचाने आया, मैं कुछ अनुभव नहीं कर सका। When I say experience, I mean I wasn't conscious of any of that. इसका मतलब कि मैं अचेत था। And that was Krishna's protection for me. और उसमें भगवान कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे थे। I wasn't aware of what happened. I wasn't aware of him knocking the motorcycle out from underneath me and me riding on the hood of his car. तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, फिर मैं मोटरसाइकिल से लुढ़क के उसके कार के नीचे आने वाला था, ऐसा कुछ। And he was going about 150 kilometers per hour. वो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। So if we practice while we're young, while we're healthy, to always call out for Krishna, any disturbance, it will become a habit. It will become our second nature, and Krishna will immediately come and protect us. तो जब तक हम नौजवान और स्वस्थ हैं, हम ऐसा अभ्यास कर सकते हैं कि किसी भी मुसीबत के समय हम भगवान कृष्ण को पुकारें तो वो हमें पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। Hari Bol. हरि बोल। Well, we're late again. Anyhow, thank you very much for your kind attention, Bhagavatam class, for allowing me to speak once again. Gratulaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Mother Megamala ki jai, Gaur Premanandi. जय।